Good morning, student. We will continue our chapter, that is national income. So today we will start the next topic, next question, that is methods of measurement of national income. Methods of measuring national income and how the national income is measured. Okay. Now in earlier session we discussed about the definition of national income according to Professor Marshall, according to Professor Pigou, and according to Professor Fisher. Now in that we learn that Professor Marshall give more focuses on the output. Okay, then Professor Pigou give weightage on the income, and the Professor Fisher explain national income can be measured in terms of what expenditure. So here जो ये थ्री ऑथर्स ने अपना अपना अलग सा डिफरेंट सा व्यूज दिया है अबाउट द नेशनल इनकम. सो दिस इज व्हाट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. सो हियर देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम, दैट इज सेंसस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, income method and the expenditure method. Now the product method mainly कौन explain किया? Professor Marshall. Income Professor Pigou, and expenditure, that is what Professor Fisher. Okay, so you have to learn the three methods of measurement of national income, that is census of product method, census of income method and the census of expenditure method. Now ये क्वेश्चन जितना easy है उतना थोड़ा difficult भी है, because यहाँ पे आपको step by step फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि हाउ इट इज अराइव्ड. ओके, दैट्स व्हाई. चल, फर्स्ट इज व्हाट सेंसस ऑफ प्रोडक्ट मेथड. नाउ अंडर दिस मेथड और वी कैन से this method, it is also called as what, that is value added product method. It is also called as what, output method. So under this method the whole economy is divided into three major sector, which are they, that is primary sector, secondary sector and the tertiary sector. Now first of all, what is primary sector? Now the primary sector, it include agricultural, forestry, mining, fisheries. So these are the example of primary sector. Then second is what, secondary sector. Now the secondary sector which include consumer and the capital goods units and the industry. तो उसमें सब कंपनीज आएंगी, सब इंडस्ट्री आएगी, एंड वो इंडस्ट्री में कंज्यूमर गुड्स भी आएगा एज वेल एज कैपिटल गुड्स भी आएगा. देन थर्ड सेक्टर टेरिटरी सेक्टर, और वी कैन से सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर विच इंक्लूड सर्विसेज ऑफ ट्रेड, transport, banking, finance, communication and so on. So first of all, under this method whole economy is divided into three major sectors, that is primary sector, secondary sector and the service sector. Now this product method or output method, it consists of following steps or stages. Firstly, we estimate ग्रॉस वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. यानी जो ये थ्री सेक्टर्स है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द सर्विस सेक्टर, उसका ग्रॉस वैल्यू निकालना है. सो फर्स्टली वी एस्टिमेट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. सेकेंड स्टेप, देन determine the cost of material used and the services rendered to these sectors by the various factors of production, and also determine the annual value of depreciation. Okay, so second step में क्या करना है, we have to determine the cost of material use, because जो भी ये थ्री सेक्टर्स है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें सर्टन कॉस्ट जाएगा, किसका, दैट इज मटेरियल यूज, एज वेल एज उसमें सर्टन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के सर्विसेज भी हम लोग यूज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल का सर्विसेज, एज वेल एज रॉ मटेरियल, पावर एंड फ्यूअल, उसका कॉस्ट सब हम लोग यूज करेंगे. सो सेकंड स्टेप में क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज हुआ एंड कितने फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के सर्विसेज यूज किया, as well as also determine the value of depreciation, कितना depreciation expense किया. So at the third stage we have to deduct all this cost and expenditure from this gross value of the domestic product. We can get net domestic product at a factor, and lastly net domestic product at a factors में add करना है the net income which is earned from the abroad, which is earned from the foreign. We can get net national product at a factor. It is also called as what, national income. आ रहा है समझ में? सो ये बहुत इजी स्टेप्स है. कैसे याद रखो कि प्रोडक्ट मेथड में होल इकोनॉमी को थ्री सेक्टर्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर में.
ओके, प्राइमरी सेक्टर्स में जो बेसिक सेक्टर्स आते हैं दैट इज एग्रीकल्चरल, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरीज. ओके, सेकेंडरी सेक्टर में सर्टन कंपनी एंड इंडस्ट्री आएगा दैट इज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री एंड द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. सर्विस सेक्टर में फाइनेंस, कम्युनिकेशन, ओके, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, दिस आर द सर्विसेज दैट इज व्हाट सर्विस सेक्टर. सो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा? सो विद द हेल्प ऑफ 3 स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप्स में क्या करना है कि जितने भी ये 3 सेक्टर्स है सो तीनों 3 सेक्टर्स का ग्रॉस वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिटरमाइन करना है. ओके, सेकंड स्टेप में क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज यूज किया, डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस किया, वो हर एक को डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है. थर्ड में क्या करना है कि जितना भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज है, सर्विसेज रेंडर्ड है, डेप्रिसिएशन है, वो डिडक्ट करना है फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो ग्रॉस में से ये सब माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट. एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. क्लियर? नाउ formula for net national product at a factor cost or national income is equal to what? Net domestic product at a factor plus net income earned from the abroad. So national income is equal to what? Net domestic product at a factor plus net income which is earned from the abroad. Now one of the most important advantage of this method is what? It indicates the relative importance of different sectors of the economy by showing their respective contribution to the national income. क्यों? कि ये पर्टिकुलर मेथड में पूरे इकोनॉमी को डिवाइड किया 3 सेक्टर्स में. सो क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि 3 सेक्टर्स में से कौन से सेक्टर्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया. ओके, इनिशियल स्टेज में इंडिया से सबसे ज़्यादा पोर्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है. ओके, सर्विस एंड सर्विस एज वेल एज वो सेकेंडरी सेक्टर उसमें से कम आता था, बट अभी क्या है ऑन एन एवरेज सब में से आ रहा है. सो दिस मेथड का अंडर दिस और वी कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज व्हाट? इट इंडिकेट relative importance of the different sectors of the economy by showing the respective contribution to the national income. यानी national income में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर्स का है? आइदर प्राइमरी सेक्टर का है, सेकेंडरी सेक्टर का है या सर्विस सेक्टर का है. सपोज जस्ट एज्यूम कि प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन था. सो वी कैन से प्राइमरी सेक्टर इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर आवर कंट्री बिकॉज वो नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. क्लियर? चलो, सेकंड इज व्हाट? सेंसस ऑफ इनकम मेथड. नाउ अंडर द इनकम मेथड द नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय summing up all the income of all the individual of a country. Now summing up मतलब adding up all the income of all the individual of a country. Now we all know that कि individual earn income by contributing their own service or services of their property, that is land, capital and so on, which ultimately create the national production. ये simple सा है कि अकॉर्डिंग टू द इनकम मेथड नेशनल इनकम कैसे मेजर होगा? सो नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड बाय एडिंग ऑल द इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एज वेल एज हाउस होल्ड. नाउ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड अपना इनकम कहाँ से जनरेट करता है? सो इंडिविजुअल अपना इनकम जनरेट करता है बाय कंट्रीब्यूटिंग देयर ओन सर्विस. वो खुद की अपनी सर्विस देके इनकम जनरेट कर सकता है. एज वेल एज जो इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी है, लैंड है, वो रेंट पे देके भी उसमें से इनकम जनरेट कर सकता है. सो अकॉर्डिंगली नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय एडिंग अप रेंट ऑफ लैंड, वेजेस एंड सैलरी ऑफ द वर्कर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर, डिविडेंड ऑफ द शेयरहोल्डर्स एंड सो ऑन. सो by adding all this income of all these sectors, we can get net domestic product at a factor cost, and by adding net factor income earned from the abroad to it, we can get net national product at a factor cost, which is nothing but national income of the country. Okay, so income method बहुत easy है कि इनकम मेथड में नेशनल इनकम कैसे मेजर होगा? बाय एडिंग ऑल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री. एंड इंडिविजुअल अपना इनकम कैसे जनरेट करता है? बाय कंट्रीब्यूटिंग देयर ओन सर्विसेज और बाय प्रोवाइडिंग देयर प्रॉपर्टी, दैट इज लैंड, कैपिटल एंड सो ऑन.
So individual earn income on the basis of that is rent on land, then wages and salaries to workers, interest on capital, profit of entrepreneur, dividend to shareholders. So by adding all this income we can get the national income. Okay, so by summing yani adding of all this income na, we can get net domestic product at a factor cost. We can get net domestic product at a factor cost, and net domestic product at a factor cost में add करो the net income which is earned from the abroad foreign, so we can get net national product at a factor cost. It is also called as what? National income. Okay, so formula is same कि net national product at a factor cost is equal to what? Net domestic product at a factor cost plus the income which is earned from the abroad. Now, one of the important advantage of this method is that it indicate the distribution of national income amongst the different sectors or different income groups such as landlord, workers, owner, entrepreneur and so on. Now, distribution of national income it means what? Okay, whatever income it is earned, it is ultimately distributed among the various factors of production. Okay, so ये based on this method कि लैंडलॉर्ड ने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, ओके, कैपिटलिस्ट ने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, देन ऑनर को कितना मिला है, एंटरप्रेन्योर को कितना मिला है, वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग वेरियस इनकम ग्रुप. एंड इनकम ग्रुप कौन से है? लैंडलॉर्ड, बिकॉज वो लैंड प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर वो रेंट अर्न करता है. देन वर्कर अपना सर्विसेज दे के वेज एंड सैलरी अर्न करता है. कैपिटलिस्ट कैपिटल दे के इंटरेस्ट अर्न करता है. एंड एंटरप्रेन्योर वो अपने मेहनत लगा के वो सर्टन प्रॉफिट को जनरेट करता है. सो दिस मेथड इट इंडिकेट द contribution, this method it indicate the distribution of national income among the various income groups. Okay, and third is what? Census of expenditure method. Now under the expenditure method, national income is measured by adding all the expenditure made on goods and services during a given year. Now the expenditure made on goods and services during a given year, that is what expenditure method. इट मीन्स एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज में जितना भी एक्सपेंडिचर लगा, दैट इज एडिंग all the expenditure made on goods and services during a given year. Now in this method we have to consider certain points, which type of expenditure it is incurred. So first expenditure, the expenditure on the consumer goods and services by the individual and the household. So first of all किसका expenditure होता है? Consumers का. That is expenditure on consumer goods and services by the individual in the household. Second expenditure made by the government. Now that is government expenditure on goods and services in order to satisfy the collective want of the society. यानी government भी certain expenditure करती है, that is infrastructure development पे करती है. Okay, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर से हर एक को सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करती है. दैट इज व्हाट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव वांट ऑफ द सोसाइटी. देन थर्ड, investment expenditure which is made by the private enterprises as well as by the government. Okay, so private enterprise as well as government certain expenditure करती है in order to produce the product. And fourth, the expenditure made by the people of the country on import and export of goods and services. Okay, and a certain expenditure made होगा for import of goods as well as export of the goods. Clear? So these are the various types of expenditure. So first expenditure कौन सा हुआ? जो consumer का expenditure. Second expenditure government का expenditure. Third is what? Investment expenditure and people of the country of import and export of goods and services. So by adding all this expenditure, we can get gross domestic product at a market price. क्या मिलेगा? Gross domestic product at a market price. Now after deducting gross domestic product, we can get net domestic product at a market price. And finally adding
नेट इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड। ओके, और यहाँ पे एक दैट इज एक लाइन हो रह गया, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रीशिएशन के बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस करना है। ओके, सो वी कैन गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, एंड फाइनली ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड, सो वी कैन गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। सो यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, बाय एडिंग ऑल दिस एक्सपेंडिचर, by adding all this expenditure, what we can get, that is gross domestic product, gross domestic product. Now gross domestic product at market price, at market price मिलेगा। ओके, उसमें से पहले माइनस क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें से माइनस क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिडक्ट द डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। ओके, सो डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। ओके, सो उसमें से अगेन माइनस करना है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। ना इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी जो हम लोग को ही अल्टीमेटली चेक पे करना पड़ता है, दैट इज वैट बोला जाता है, ओके, जीएसटी बोला जाता है। सो इट्स दिस आर व्हाट, सर्टेन इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो वी कैन गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, एंड वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट में ऐड करो, that is net income earned from the abroad na, so we can get net national product at a factor, and it is nothing but national income of the country. okay, so यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना है, हम लोग क्लास में इम्प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एडिंग ऑल दिस इनकम वी कैन गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, उसमें से माइनस करो डेप्रीशिएशन, सो वी कैन गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, उसमें से माइनस करो इनडायरेक्ट टैक्स, सो मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, और उसमें ऐड कर दो इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड, सो वी कैन गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, एंड इट इज नथिंग बट नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। सो लास्ट का फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला सही है, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट इज व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीशिएशन minus indirect tax plus net income earned from the abroad. Yeah, so one of the most important advantage of this method is that it provide information about the level of consumption, expenditure दिखाता है, the level of consumption or level of expenditure made by the that is individual as well as government as well as household as well as investment in the economy. Clear? So one of the main advantage of this method is what, it provide information about the level of consumption as well as investment which is made by the individual, household, government and in a particular economy. Clear? So these are the methods of measurement of national income. Clear? So next session हम लोग next topic start करेंगे, that is circular flow of economy model, that is two sector model and the four sector model.